Hello, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. You're watching me on YouTube as always, and you're listening to me on Spotify. And as always, with this drama gup, I have with me Sadaf Haider. Sadaf, Assalamu alaikum. Walaikum salam, Mavish. Always good to be with you. Yes, and always good to catch up with our drama sessions. तो सदफ Mhm. बहुत दो चार बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े बजूकाज हैं जो हमने जिनके ऊपर बात करनी है, बम्स हैं. वी हैव जट पत्तों का बन, वी हैव जफा, वी हैव कभी मैं कभी तुम, सुन मेरे दिल. हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि आप सुन मेरे दिल का रिव्यू कब Mhm. करेंगे. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद the big question, which is the big discussion which I want to have with you and with everybody who's watching एंड लिसनिंग इज जफा. जफा में एक बहुत ट्रिगरिंग मोमेंट था, बहुत बड़ा Yes. एक सिचुएशन आई. सो व्हाट वाज योर टेक ऑन इट? How did it make you feel? I think that's a good, it's a very therapist sounding question, but how did that make you feel, that whole scene? Hmm. I think I'm with the rest of the audience. It was shocking. Hmm. Literally, we were expecting it, like, लेकिन जब हुआ, तो Hmm. wasn't it a shock? We all knew Hassan was going to do something absolutely terrible because he was a ticking time bomb. Yes. And लेकिन जो उसको I have to again Mohib Mirza and Mavra या Maura whatever the Yeah. pronunciation is. My Mavra. apologies. Hmm. Mavra है. जी मैं पता नहीं मावरा. क्यों मावरा कहती हूँ ना. Me आपका and एक्सेंट है, Rubab. इट्स ओके. हाँ, आप एंड रबाब. Anyway, but Mavra and मुहिब. Mohib were amazing. Hmm. And what annoyed me, and I think you also picked up on this, was that people were saying she should have kept it low key. I think some media outlets also said it. Some Now, there's a reviewers way, also said it apparently in their video okay, reviews that yeah, she triggered she should, him. and like Itself. she was also doing this to him, and yeah, yeah, that was there. Yes. I keep remembering a line from Faiza Iftikhar's wonderful drama, Dil Lagi. And she said, औरत के पास और होता क्या है सिवाय जुबान के. Hmm. Hmm. And that doesn't give you an excuse. And she had put up with a lot. And Yeah. this is the thing, people tell me. I know people, well, I don't know them personally. Let's Hmm. make it clear. Hmm. Allah ka shukr hai, I don't know anybody personally who has ever suffered domestic violence. But Hmm. women will stay with men who are adulterers, domestic violence, all this kind of stuff. And it is a cycle of abuse. I cannot claim to understand it. Hmm. Okay, and she did her best, Dr. Hmm. Zara, Hmm. because I think people really want things to work. They had a huge wedding, it was an arranged marriage, and yet she was really trying to make it work. Hmm. And in the end, for her pains, what did she get? Yeah. I mean, I personally want the Dadi in jail, both of them. Enabler. No, no, they're not enablers. Particularly Hassan's Dadi, It's right? complicit. She's Yeah, complicit. complicit. Hmm. क्योंकि Hmm. even at the hospital, मेरी बेटी को कौन मारेगा? Hmm. But Hmm. I didn't like the language that I heard online, Hmm. that just because Dr. Zara shouted back at him, Yeah. she deserved it or she triggered him. But I think that's a reframing. I think we talked about this last time, because we were watching the जो promos थे, teasers, and we knew something was coming. Hmm. So we also said, देखो framing ये होती है जिसमें victim is not to be blamed. Hmm. हाँ, if you do have a violent, angry person, plan your escape. Hmm. Do not confront him. But that's Sure. different. That's Yeah, different from that's what not was like being you said. triggered him. Hmm. Yeah. Hmm. No, but that's like my slight disagreement with your point here is it's not about Hmm. reframing. I think that whole Hmm. thing, scrap it. Don't reframe it, scrap it. Because I Okay. think that it's not, see, when we say that she should not have, you immediately, that's just, let's just not go into You're opening the door, you're yeah, saying, right? let's just not go there. Okay. That's number one. The second thing is, uh,
we have to look at when you talk about reviews, and let's give Hmm. people the benefit of intelligence, that people are smart enough to understand context. Okay, like when they claim that, oh, we are reviewers, मैं आम लोगों की, आम जनता की बात नहीं करी, मैं किसी स्टूपिड कमेंटर को किसी और कटहरे में खड़ा करूंगी, मैं स्टूपिड कमेंटर को एक जहालत के कटहरे में खड़ा करूंगी. Hmm. But the people who claim to write and talk about certain things and certain ideas constructively most of the time, then when they come up with things like these, or even if they don't do it most of the time, even if they're just roasters, there are certain lines, and even I generally don't, I'm like, हाँ यार इंटरनेट पे इतनी बकवास चल रही है, कोई कुछ भी लिख देता है तो ठीक है भाई, जाने दो। हाँ जाने दो, कोई कुछ समझ रहा है, कोई एक अब्यूजर को ग्लोरीफाई कर रहा है, ठीक है चलें, हमारे ड्रामों में ये दिखा रहे हैं कुछ जगह. लेकिन यहाँ पे मैं बहुत खुद ट्रिगर हो गई थी, और मैंने इस चीज पे काफी बोला. हम्म। तो मेरा ख्याल से मुझे जो रीफ्रेमिंग तो मुझे करनी ही नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट की, मुझे सिर्फ बात करनी है कि एक विक्टिम जो है वो विक्टिम है, तो लेट्स ऑल एग्री दैट शी इज अ विक्टिम. एंड विक्टिम यस। जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है सदफ कि आप बहुत कमजोर हैं और आपको एक बंदा ना कूटे जा रहा है, मारे जा रहा है, अब आप क्या फाइट बैक भी नहीं करोगे? आई डोंट वांट कोट द person. Actually, I don't remember the person, I don't want to quote the statement, but there was an Indian politician who said, or some person who had, and somebody influential who had said that she should not have fought back. She should have It let was us do it it. was the Nirbhaya. 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 Yes, it was the It Nirbhaya was the rapist perpetrator. who said it. One The of the rapist. Yes, one of the rapists has said. I can't believe that this is a thing we are saying. One of the rapists. So he said this, that she should have not fought back. So I feel like this whole, just scrap it, just scrap this whole line of thought process, question, all of that. No. And let's, educated reviewers, educated people who got even some bit of exposure, let's not get into that Pandora's box, because you don't want to go there, because there's nothing but darkness there. There is, when a woman is fighting back her abuser, there will be some punches she may throw in also. You cannot tell that person that तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, पलट के देखा उसने तुम्हें और मारा. कुछ तो करेगी. और जारा जैसी लड़की, जो कि हम शुरू से उसको इस बात पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्यों है, उसने फाइट बैक, पढ़ी लिखी लड़की है, उसने फाइट बैक क्यों नहीं किया, उसने कुछ बोला क्यों नहीं? अच्छा, कब मैंने कई ये कमेंट्स भी पढ़े थे शुरू में, उठा के एक थप्पड़ मार देना था उसको. भाई ये होता है जब लड़की थप्पड़ मारती है, तो ये होता है, और मारती हैं लड़कियां, सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां वो फाइट बैक करती हैं. तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट. And that was my take on it. My main take on that episode of Jaffa, it was such a brilliant episode. And I want to say this categorically, that people who want to write about domestic violence on TV, people who want to direct and depict domestic violence on TV, please take notes from Jaffa. Like Jaffa should be the standard by which you measure how to show domestic violence on television. Okay? It's responsible, it's realistic. It's not glorifying the abuser in any way. It is showing that abuse occurs in such complex situations that it's not always easy to walk out. मतलब वो गई क्यों नहीं, तुमने छोड़ा क्यों नहीं? ठीक है. और दूसरी जो इनेबलर वाली बात की ना आपने, ये वाली दादी वॉर, कैसे आके ये लोग, एक बंदी आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि बेटा तुम छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, जो हसन की दादी है, और एक दादी आपको वो पूरी सोसाइटल, वो पूरी जो एक प्रेशर होता है वो डाल रही है आपके ऊपर. अब माँ बाप कितने अच्छे हैं, माँ बाप कितने तरीके से, अच्छा किसी, मैंने ये भी पढ़ा सदफ, किसी ने ये भी लिखा Hmm. कि वो माँ भी कैसे हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी, माँ की इंटरफेरेंस बहुत थी भाई रिलेशन. I am very scared of these comments because I think behind them are the faces of abuse. They are abusers. Yes, 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 yes. I'm not getting, I'm sorry, I hate to accuse people, but this is what I'm getting the impression. These Yeah, people that excuse rape, that yeah, excuse these things, yeah. behind these masks are some टेरेबल must be हॉरिबल विलन्स. horrible सीरियसली, things. सीरियसली. और Yeah. इसमें, इस ड्रामे में जो मुझे बेहतरीन बात लगी, वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स हियर इज द कॉन्ट्रास्ट दे शो बिटवीन नुमेर एंड हसन. These are two individuals clearly with their own baggages. It's not like Numair is without his baggage. Obviously, his relationship is very complicated and he's managed to sail through that. He himself has been a confirmed bachelor for many years. पढ़े लिखे लड़के हैं दोनों, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, अपर मिडिल क्लास लड़के हैं, अपर मिडिल क्लास बीवियां उनको मिली हैं, या लाइफ और एक जो उन्होंने एक्सपोजर, जिसे आप कहते हैं ना, जिस तरह के हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा की हम बात करते हैं,
वो वहां से दोनों लड़के हैं, लेकिन एक कैसा है और दूसरा कैसा है। और वो, और ये पता है, ये बात मर्द के मुंह से सुनना बहुत जरूरी थी कि मर्द या औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। तो मुझे वो सीन भी बहुत बेहतरीन लगा। It और was मुझे brilliant. इट I वाज ब्रिलियंट। love that scene. आई लव Mm. दैट सीन, इट्स एन आइकॉनिक सीन। और मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने उसको शूट किया है ना, कि मतलब उन्होंने उसकी ब्रूटैलिटी, और मेरे लिए जो वो इमेज मुझे हॉन्ट करेगी ना सदा सारी जिंदगी के लिए, जो वो द वे दैट शी इज फ्यूरियस एंड props and hats off and standing ovation for Mawra Hussain. I think मैं जब भी उनकी परफॉर्मेंस देखती हूँ, she keeps getting better. She's one of those actors. Every project she signs, she's better than the one she did. Okay, Mavra has some practice at this. हम्म। I don't know, हम लोग फहाद मुस्तफा की बात कर रहे हैं आजकल because of हम्म। कभी मैं कभी तुम. जी। So Fahad and Maura were in एक तमन्ना ला हासिल, हम्म। and that was about a lower middle class family, अच्छा, much ओके। lower. हम्म। And that had a lot, actually that was horrific. I think it अच्छा। got a lot of ratings. हम्म। लेकिन हम लोग as reviewers, हम्म। we were like, how dare you show this? हमें अच्छा। दिखा क्यों रहे हो ये? हाँ, अच्छा, मैं Because ना देखो। they, मावरा की graphic violence उन्होंने दिखाई, and the effects of the violence. हम्म। And she did eventually get away, but again the mother-in-law was the enabler. And it हम्म। was, and it was very much set in a cultural context. हम्म। And the writer fought back and he wrote back. उन दिनों में Facebook ही होती थी. जी। And he said, I actually didn't tell you half of it because this is a true story. And so हम्म। is Jaffa. हम्म। When I've spoke, we had a space, हम्म। and it is a true story. This is a true हम्म। story of true people, because people say, अच्छा ये हो नहीं ये सकता, नहीं, क्यों right? नहीं हो But वो सकता होता यार? है. होता है यार, Yeah, क्यों नहीं होता? ऐसी yeah. कहानियां मैंने खुद देखी हैं, सुनी हैं। मैं ऐसी औरतों को पर्सनली जानती हूँ, कुछ दोस्तें हैं मेरी जो कि पढ़ी लिखी खुद भी हैं, मियाँ भी पढ़े लिखे हैं, और मारे खा रही हैं, और बड़े अरसे से खा रही हैं। और वही बात है कि सोसाइटी उनको प्रेशर में रखी हुई है कि वो क्यों नहीं, तुम उसको छोड़ के चली जाओगी तो इसको क्या होगा, मतलब मेरी जिम्मेदारी है किसी के अनडायग्नोज सन को बर्दाश्त करने की। तो ये खैर वो उस तरफ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हमें हमें ट्रिगरिंग बहुत होता है, तो हम सवाल पूछते हैं कि हमें क्यों दिखा रहे हो यार, दिस टू मच। लेकिन Yeah. मुझे लगता है कि जफा के अंदर उन्होंने वो उसको पूरा मारते पीटते थ्रैश करते नहीं दिखाया, लेकिन वो जो मोमेंट है जब वो आके जमीन पे गिरती है धड़ से, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। बिकॉज सदफ वो मोमेंट इतना, आई हेट टू यूज दिस वर्ड, गिव मी अनदर वर्ड फॉर इट, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड आइकॉनिक, आई वांट टू मे बी यूज द वर्ड मेमोरेबल, या पॉइनियंट। बिकॉज वो एक Poignant, I think. पॉइनियंट, Poignant is a हाँ, good word. पॉइनियंट इज अ गुड वर्ड। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसने स्क्रब्स पहने हुए हैं, डॉक्टर ज़ारा उसका लिखा हुआ है, हाथ में उसकी प्यारी सी लेकिन अंगूठियां she हैं। cannot protect herself from शी कैन नॉट पागलपन. पुट है, हाँ। इस और आदमी के वो, पागलपन से वो बच नहीं सकती, और देखो. पता है सदा I हम वो ड्रेड कर रहे थे ना, वो ये मोमेंट हम उसको yeah. इस हाल में देखना ड्रेड कर रहे थे, एंड व्हेन दैट मोमेंट फाइनली केम, Mm, मतलब हार्ट ब्रेकिंग। एंड क्या कमाल का काम किया है सबने, और दानिश नवाज को बहुत मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ। वो एक फनी definitely. फनी चीजें करते रहे हैं वो, मगर Mm. जब भी उन्होंने सीरियस टॉपिक्स को पकड़ा है ना, तो उन्होंने इतने उसमें ग्रिप के साथ काम किया है। एंड अगेन वो हम कॉमेडी वाले डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स को हम इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है। किसी को रुलाना आसान है, मगर किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो वो मुश्किल काम Sorry, कर सकता है ना, वो। and a note to Danish. I don't want to come between brothers, but Danish, you're kind of like, I'm sorry, Ghair is not as good as Jaffa. Okay. मुझे But तो खैर, मैंने जो अटेम्प्ट किया गैर को देखने का, मेरे से तो नहीं हुआ सदफ, सॉरी, you मुझे पता you है। know, as a parent, I हम्म। have two girls. Mashallah, या। say they've got any number of degrees. They're doing this. Up, this is your worst nightmare as the या। parent of a daughter. और ऐसा कि कोई आपके बच्चे को मार रहा है और हम्म। आप you have to watch from a distance. हम्म। And you cannot stop them. Acha, this is the funniest thing. And I हम्म। think abusers in general, they हम्म। pick certain kinds of girls. And they knew हाँ, that दैट्स अ गुड Zara पॉइंट। was सही दैट्स अ kind of रियली लड़की. गुड पॉइंट, Hmm. या दैट्स सच अ गुड पॉइंट, या। ये जो दादी ने रिश्ता, रिमेम्बर दे वर एट पेन्स टू शो कि ये अरेंज्ड मैरिज है, इट्स नॉट अ हम्म। लव मैच. हम्म। और हसन और ये एक दूसरे को, हसन तो बहुत पसंद करता था जारा को. सो एंड आई लव द वे, दिस इज वेयर द प्रोडक्शन टीम, आई एम गोइंग टू गिव देम kudos.
they didn't show him as a zalimana creature या बदतमीज या जहल in the lat ek tamanna la hasil. They हम्म। showed lower middle class and drinking and wrong things and poverty. ठीक है। यहाँ कोई बहाना नहीं था. ठीक And है। they showed हसन लाड भी उसके बड़े करता था, उसे तोहफे और तोहफे दे रहा है. He हम्म। is looking after, he's actually quite romantic, he's very या possessive of एनी her. अपोलोजाइजेस, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा भाई माफी तो मांग रहा है ना, दिल का बुरा नहीं है। हैं। Well, I would like to know, right? And this is Umaira Ahmed wrote a brilliant line. हम्म। Again, Bichare Fahad Mustafa, brilliant actor, but he was in Kankar. कंकर। And one of the things that Sanam Baloch did was she finally slaps him back. हम्म। She's married to someone else, and he या। says to her, "Kya mila tumhe? हम्म। Gurbat, ye wo, etc." So she says she slapped him back, and she goes, "दर्द होती है." हाँ वो Did you सीन feel मुझे it? याद है, मुझे वो सीन याद है, Yeah. हाँ I अभी कुछ mean, दिन पहले that देखा is मैंने, in हाँ। my heart and mind. The brilliant actors, Sanam Baloch and Fahad वी Mustafa. मिस हर, हाँ। And I think it's very brave of actors. Unfortunately, actors are not willing to let go of their hero image. या। Right? या। I think हमारे जो thespians हैं या masters, sometimes I complain about Faisal Qureshi and people like that, but उनमें guts बड़े थे. हम्म। फहाद मुस्तफा ये लोग villains बन जाते थे, side roles ले लेते थे, what we would consider side. अभी मैं I was looking at scenes of आखिरी बारिश, which for some reason हम्म। someone has put up as Hira Mandi, right? ओके। And on the net, some ओके। they steal things all the time. Akhri Barish हाँ। was a brilliant story. Usme Sami Khan hai, and he हम्म। plays a pimp. I हम्म। mean, that is so brave. हमारे actors पहले अपने craft को hone करते थे, and they हम्म। owned being an actor rather than being a hero. So हम्म। I mean, आई थिंक uh, सर इसमें थोड़ा कसूर हमारी स्क्रिप्ट्स का भी है, हमारी स्क्रिप्ट भी थोड़ी yeah, सी ज्यादा, और लोग सेफ प्ले करते हैं, लोगों की अब ब्रेड एंड बटर चल रही होती है तो लोग चाहते हैं कि बस हम एक अच्छा सा हीरो कर लें या साइको साइको कर लें, उसके भी रेटिंग्स आती हैं अब जैसे जिस तरह का yeah, हीरो I है guess तो possessive psycho. पोजेसिव Yeah. साइको टॉक्सिक हीरो स्टार्टर पैक वाला काम कर लें, या तो वो कर लें, या फिर हम जो है वो जैसे मुझे लगता है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे रोल में भी शाइन कर जाते हैं, सजल उनमें Hmm. से एक है, छम्मी जो उन्होंने किया था, या अभी भी मुझे लगता है जर पत्तों का बन में है वो सेंट्रल कैरेक्टर लेकिन वो एक छोटा सा रोल कर रही हैं। तो यार कुछ सजल का छोटा तो नहीं रहा रोल था, शम्मी नहीं, वाज सदफ अक्सर छम्मी की, अच्छी छम्मी होगी. बन गया लार्जर देन लाइफ, बट छम्मी Yeah, इफ but यू in the रीड द book it बुक, wasn't. no, Yeah. even in the story, Yeah. even if you look at Angan as a story on TV, it was Hmm. Alia's story, it is Alia's Yeah, it is on. जर्नी, ठीक है। Yeah. लेकिन लेकिन उसने वो खा गई पूरा ड्रामा। इसी तरह जट पत्तों का बन में भी मैं उसका इंतजार ज्यादा, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मजेदार कुछ ट्रैक्स भी हैं, लेकिन उनमें वो मजा नहीं है जो सजल और हमजा को देखने में आता है या जो सजल को देखने में आता है। बस उसके अंदर कुछ है, होते हैं कुछ एक्टर्स ऐसे। और फहद की जहां तक बात है, कि फहद ने तो किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि उसने प्रोडक्शन आई थिंक शुरू ही तब की थी जब वो बहुत सारे ऐसे ड्रामे कर चुका था जिसमें उसने हर तरह के रोल किए थे। आई थिंक इट वॉज हिज पॉडकास्ट विद अहमद अली बट, जिसमें उन्होंने कहा Hmm. कि भाई मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये रोल भी कर लिया, मैंने छोटा रोल, बड़ा रोल, गुड रोल, बैड रोल, दिस रोल, तो ये किए हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुछ जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं जिनको हम अक्सर बुरा भला भी बोल लेते हैं, वो वाकई उनके अंदर वो टैलेंट है, और दानिश तैमूर के पास टैलेंट है, मतलब वो कर रहा है कन्विंसिंगली ये रोल, तो टैलेंट की बात है। ओके, um, हम लोगों ने डांटा था लास्ट वीक, बट नॉट डांटा, बट वी हमने वो एतराज जाहिर किया था, राइट? जी आई ऑन। डोंट नो द राइट उर्दू, बट हाँ। ऑन फवाद. But he is just on the edge of that generation. हम्म। He has done all, I think one of his biggest issues, he doesn't want to repeat that romantic husband role. मे बी। And you know that, and this is why you'll see that in all his dramas, he has a very different role, a हम्म। different personality. And this हम्म। is why sometimes हम लोग पागल हो जाते हैं, हम्म। because we say, Fawad, do that romantic husband role, please, 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 please. आई थिंक दैट्स लेकिन इज वो मानते नहीं है. वो उनका बहुत बड़ा एक, जिससे सक्सेस उनको मिली थी, तो सक्सेस रिपीट करना जो होता है वो एक तो वैसे ही लोग डरते हैं कि पता नहीं हम कर पाए Hmm. वो, हम उसको फॉल शॉर्ट ना कर जाए, बट आई डोंट थिंक फवाद should, if that is in his mind and if he's watching by some off chance, I don't think This he is has. just my guess. Yeah, I This think is he's my a guess. very talented actor, and I think that he's and talented people are slightly mad. So I think he's slightly mad because he chose something like Money Back Guarantee, which is a completely deranged sort of a role that he took on, and I was like,
Why would he take this role? And even on Okay, paper. he has said in an interview that one of his favorite, or maybe the favorite character he Hmm. ever did was Asghar, who was terrible person. Yeah, Asghar very is funny. Akbari Asghari, right? So Yeah. that tells you that he was evil, but not quite evil. And then, Yeah. yeah, same with Muju in Hmm. Kuch Pyar Ka Kuch paake Pagalpan. vagabond. That was a Yeah, very good character, by the way. That was a that very was, I mean, Samira layered. Fazal, हाँ. Samira Fazal, Yeah. So amazing writing. सो आई थिंक कि कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जिनके पास Hmm. ये कमाल होता है, वो कर सकते हैं। अब करें ना करें वो एक अलग बात है, उनकी किस्मत में ना है, वो खुद ना करे, एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं जा रहे। अच्छा, कमिंग बैक टू जफा, आई थिंक कि मैं थोड़ा जो दानिश नवाज की बात कर रही थी और जो स्टोरी की बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड अब बनता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो कि मैंने देखा है कुछ सक्सेसफुल ड्रामों में, वो ये है कि लड़का चपेट चपेट में मार दे तो लड़की फिर भी उसको कहेगी नहीं मुझे तो अच्छा लगता है ना, मतलब मैं तो। Yeah, और फिर well, it will be राइटर्स, the last day. It will be the last day with me anyway. well, any Yeah. woman worth her self respect would, yes. And then also I've seen writers justifying it कि कुछ तो किया होगा ना जो उसको चपेट चपेट पड़ जाते हैं लड़की को। तो मेरा ख्याल से जफा has done a very big role in course correction for these, for the Yes. storytelling, and the fact that it's doing so well is making my heart even grow bigger because मुझे डर ये लगता है कि बहुत अच्छी कहानियां होती हैं, अक्सर लोग देख नहीं रहे होते, पता नहीं होता उनको कि अरे यार ये ड्रामा बड़ा अच्छा था, चल रहा था। बट जफा, And this is a sorry, I keep interrupting you. I नो apologize. नो, बस मैं यही कह रही थी कि जफा Go on. की सक्सेस ये मुझे बहुत ये हार्टनिंग लगी मुझे कि बहुत अच्छी बात है कि लोग देख रहे हैं। जी, क्या कह I रही थी? think it's casting as well, यस। right? Because I know a lot of people complaining about, oh, Numair or Seher ki age gap, but I think that रोल ही there's यही a है। reason for that, right? हाँ There's a reason हाँ। for that. हम्म। Not Seher, sorry. बीबू उसका एंड नाम ही मैं भूल गई हूँ बीबू। मैं उसकी उम्मीद कहूंगी आफ्टर अ व्हाइल हाँ। या। उसका नाम but हाँ, that age gap what was I going to say now, but I just want to congratulate the production team because डेफिनेटली। I think that it's not just writers, sometimes it's the production team, the director, and I complain a lot about content heads, but sometimes they're great. या। They actually hone a drama and हम्म। they make it better than it was originally. यस। And that's something we jahan acha hota hai, let's say. And हम्म। now the comparison with Zad Patton Ka Ban, हम्म। right, is if you have a popular star cast, हम्म। and that is kind of like a messy drama, which Jaffa हम्म। is, हम्म। you get the message that you're trying to give to हम्म। a lot more people. या। And this is या। why Udari was a big hit because you had यस। these huge stars in it. या। And younger people, it sparked a huge conversation. हम्म। Whereas maybe Zad Patonga Man with Mustafa Afridi has been a bit, like this. हम्म। I think, the only reason people are watching is maybe Sajal and Hamza. Or maybe अरे that's भाई me. वो करते हैं नहीं यार, सदफ सही कह रही हैं आप, सबके Yeah. लिए, मेरे लिए, मैंने हालांकि आई आई एम क्रॉस माई हार्ट, आई really tried to get myself invested in the rest of the stories. I think they dragged that servant child wala, the child death wala story, Mm-hmm. and I think that what goes wrong with stories like Zat Patton Ka Ban and then what goes right with things like Kabhi Main Kabhi Tum is that आपको ये टॉपिक दिखाना है, बट आपको उसकी रियलिटीज और उसके निटिग्रिटी में नहीं जाना, प्रोडक्शन पे पैसा नहीं खर्च करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो वो बच्ची की माँ है समिया मुमताज है, वो सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया और वो फोन पे सारी अपडेट दे दी और हमें पता चल गया, मतलब ऑडियंस समझ जाए कि ये सारा वो जो वो शहर गई थी फाइट करने के लिए अपनी बेटी का केस, वो सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, हमें नहीं पता चला, डायलॉग से बताया उन्होंने। अब क्या होता है कि आप इतना सेंसिटिव मसला ले लो, आप 50 और ट्रैक्स ना डालते, आप उस एक ट्रैक को अच्छे से दिखा देते, आप ये जो, क्योंकि ज़ाहिर है आपने उसमें पैसा खर्च किया, आपने अपनी प्रोडक्शन टीम को बिठाया जहां भी उन्होंने गांव देहात में जहां शूट किया, फिर आपने इतने सारे एक्टर्स लिए चाहे वो जितने छोटे ही क्यों ना हो, आपने उनके एक्टर्स को रखा, आप उस दो ट्रैक रखते, मेन ट्रैक्स, एक ये मीनू का रखते, मीनू और नौफिल का रखते, और आप एक उस सर्वेंट चाइल्ड का रखते, बिकॉज हमारे यहाँ ये इतने हॉरिबल केसेस हुए हैं और इतना फ्लैश पॉइंट बना था It उनका। deserved they attention. deserved a dedicated track which was में मुर्गी लड़ाने वाला, and I love तनवीर साहब and उनका जो, what I want to talk about जद पत्तों का बन is that dialogue, and I think that the whole drama is very idealistic. I think it's sort of telling you, what if our fathers didn't kill our daughters in the name of honor, what if communities
came together, fought for what's truth. What if harassment allegations के बाद लिंचिंग नहीं होती, क्योंकि ये हुई है, पहले हुई है, रूरल एरियाज में इस तरह के किस्से हुए हैं. What if a good man stayed and tried to make his difference in a community where he thought it was probably impossible? So I think a lot of the drama's tracks are all about what ifs. These things don't happen, but what if they did? And if when they did, this is the chain reaction that would follow. So I think that but it's not landing. You know what I mean? It should have, but it's not. And Sajal and Hamza are the high points, and the high points, and the way she says आपके बाल बहुत अच्छे, मैं छू सकती हूँ. इतनी कोई मासूमियत थी भाई इस चीज में. और मुझे लगता है कि ये है हमारे ड्रामों का प्यार और जो मोहब्बत है. तुम मोटरसाइकिल पे साथ बैठ गए, आपके बाल बहुत प्यारे हैं, पैर पे तुम्हारे जख्म लग गया है, मैं मरहम लगा देता हूँ. मतलब रोमांस ये है भाई. ग्रेटिफाइंग इमेजरी नहीं होती रोमांस, तो वो तो बेस्ट which is पार्ट a है. easy move, इजी मूव. right? तो इजी. Easy move to कभी मैं कभी तुम. अच्छा. इजी मूव टू कभी मैं कभी तुम. माई टेक ऑन कभी मैं कभी तुम. रिसेंटली एपिसोड में हमने गाइस ये देखा है कि अभी जो हमने इनफैक्ट कल ही देखी है, उसमें मुस्तफा इज हैविंग मेल्टडाउन्स ओवर शर्जीना's फादर ट्राइंग टू हेल्प. एंड कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस थी अबाउट, ओ मुस्तफा ऐसे क्यों कह रहा है ये वो. आई थिंक यू गाइस हैव नॉट लिव्ड विद अ मैन और समथिंग, और यू डोंट नो व्हाट मेन आर लाइक टू देयर वाइव्स. मे बी लाइक वो लड़कियां जो ये बातें बोल रही हैं जो घर में, मतलब जब अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है तो वो घर से बाहर निकल जाती है, बड़ा अब्बा ऐसे ही लड़ते हैं तुम्हारे भी, सब सारे आधे आधे ज्यादा अब्बा ऐसा ही होते हैं. तो Hmm. मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन उस बेचारे की वैलिड है. आपका क्या ख्याल है? I'm gonna say, I was talking to my husband because I wanted a man's point of view. He goes, देखो ना, he has all these pressures, या. and for a man, हम्म. financial pressure is like it वर्स्ट. finances his self-worth. हम्म. Self-worth. सेल्फ बता वर्थ. नहीं रहा वो शर्जीना को कि क्या हो रहा है, etc. at the office, हम्म. right? He's shielding her. अपनी तरफ से he's shielding her. नहीं, So he डिस्प्लेस भी goes, कर रहा है ना अपना एंगर उसके yeah. ऊपर. डिस्प्लेस Yeah. कर रहा है वो अपना तो एंगर फिर सारा. अच्छा, दिस इज व्हाट आई हेट इज व्हेन पीपल से बीवी पे नहीं करेगा तो किस पे करेगा. यार, आई वुड प्रेफर कि पड़ोसियों पे करो, राइट? मेरे पे ना करो. मुझे माफ करो. या मुझे मुझे माफ करो नहीं, अगर इतने किसी डोले पे. बनाए हुए जिम में निकालो जाके, इतने डोले हाँ, मुस्तफा ने जाओ. बनाए हुए जिम में निकालो लेकिन जाके. दिस इज सच a beautifully written natural story. Men have a different love language. हम्म. They feel, they want respect, they want, and which he's not getting from Shajina's father. And he's, by the way, grown up in a family which is very thoroughly, like a Right, mother, financial. especially, Yeah. who was constantly placing value on money. And definitely, let's talk about the mother. उनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया है Oof. finally. But I just wanted to make my point about women and men हम्म. needing, having different needs. अक्सर लोगों की लड़ाई इसीलिए होती है. शर्जीना wants connection. She हम्म. wants emotional commitment. बार बार वो उसे कहे के, अच्छा शर्जीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो शर्जीना, तुम प्यारी हम्म. लग रही हो. राइट? वो बार बार कहती है, मैंने तुम्हारे हाथ पे सोना है. दिस रोमांटिक बातें करनी इज, है, हाँ. yeah, and you can see this is Farhat Ishtiaq's magic, right? हम्म. She knows कि औरत का दिल क्या चाहता है, right? बिल्कुल. It doesn't want the geo candles and वो अरे. red वो curtains जो हाँ. उड़ रहे होते हैं. बीच No, के ऊपर, हाँ. yeah, हाँ. always on the beach, by the way. ऑलवेज Anyway, बीच, हाँ. and what men want is totally different. They want to be a provider. They want to know that the bills are met. I mean, I love that scene. It's still stuck in my head. वो हम्म. जो छोटी सी ऑफिस में वो पहले मुस्तफा काम करता है and all the men are discussing, I have to send my child to school. I have या. to. That is love, because हम्म. I wish And people that would is life. understand. That Yeah, is life. there is so many men that don't do that. भाग या. जाते हैं, हम्म. करते ही नहीं है. And we हम्म. and I'm saying this to people who are complaining about Mustafa. And हाँ. if he actually went to his ससुराल वाले, अब सब उसे निकम्मा कहेंगे. हम्म. You'll say कि ये घर दामाद बनने का इससे ये शौक कैसा क्या. हीरो दिखा है, ये तो हीरो है ही Yeah. नहीं, ये तो लूजर है, असली में लूजर है, हाँ. Right. So नोक जोक मियाँ बीवी में होती है, but I will say one thing in Shurjina's favor. She has been so patient. हम्म. जब and this is, we women get this all the time, right? जब उसकी माँ इसके ऊपर हावी थी, she हम्म. was complaining non-stop about Shurjina, making bitter comments, turned her into a household slave. हम्म. लेकिन अब the shoe is on the other foot. अब Mustafa has to put up with Shurjina's father हम्म. making comments, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा. And हम्म. I love that contrast. And हम्म. whereas अगर शर्जीना बोलती, तो हम्म. we would have said,
ये तो हीरोइन ही नहीं है, हाँ। बिकॉज ये शी टॉक्ड बैक टू द इविल मदर। चलो। असल में ये हीरोइन वाली चीज बड़ी अच्छी आपने कही कि हमने हम्म। हमने हीरोज पे तो बात की है फरहत इश्तियाक के, लेकिन हम्म। फरहत इश्तियाक की जो हीरोइंस हैं, एंड आई वाज हैविंग हम्म। दिस डिस्कशन विद समवन एल्स दैट while I consider, and this is a personal opinion, that I consider Umaira Ahmed to have created that original sin where she said बर्दाश्त कर लो, इसी में बहुत सुकून है और यही तुम्हारी सुरखरू होने की रीजन बनेगा, जुल्म बर्दाश्त करो, जो कि ना इस्लाम सिखाता है और ना आपको करना चाहिए बाय द वे। हम्म। तो वहां पे फरहत इश्तियाक का जो टेम्पलेट है हीरोइन का वो थोड़ा सा अलग है। वो कहती है कि हाँ जिंदगी में बर्दाश्त करना पड़ जाता है, सिचुएशंस क्रैपी हो जाती हैं, लेकिन अपनी जबान नहीं खोना। तो खिरत भी ऐसी थी। खिरत स्टूड अप, यस शी क्राइड एंड वाइंड एंड शी वाज आल्सो सती सावित्री वाला पूरा एक वो जो एक हम एक मोल्ड बनाते हैं वो था उसके अंदर। लेकिन व्हेन इट केम टू दैट पॉइंट, जैसे मैंने आपसे माफी मांगी कब है, और ये आपकी बेटी है, इट्स योर जॉब टू डू दिस बिकॉज आई कांट डू इट, इन वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। That was one of the most empowering lives हम्म। lines in हम्म। Pakistani literature. जब हम्म। उसने कहा ना, मैंने आपसे माफी मांगी कब है, and हाँ। she left. I mean, a lot of people criticized her कि बच्ची को छोड़ के चली गई है, but हम्म। it was for me because we had seen so many women on TV screens हम्म। taking it. हम्म। Ma, abuse, everything. And with Farid Ishtiaq's heroines, they never allow their self-respect to be No, and compromised. they talk back like we would expect a woman who's empowered enough to talk back. Like for See, example, if you बदतमीजी is not empowerment. नहीं, Making a बदतमीजी तो point is a बात ही नहीं power. भाई, अपनी Yeah. जबान को इस्तेमाल अच्छा, मुझे करना। कश्यप बदतमीज लगती थी। I know everybody's gonna hate me, but वो मुझे बदतमीज और नाशुक्री लगती थी, मुझे वो and I बेटर think लगती थी, एक वो वो एक yeah. कैरेक्टर थी, वो हीरोइन से Hmm. ज्यादा कैरेक्टर थी। खैरत एक Yeah. हीरोइन थी ना, मतलब डूइंग द Yeah. राइट थिंग एंड She was स्टैंडिंग an अप। ideal. हाँ I आइडियल, actually हाँ। learned things from her. I या learned things. बट इन शर्जीनास अनिल केस कुछ से मेरी माँ बोल बोल मेरी माँ। नो, बट इन शर्जीनास केस लाइक मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी थी शुरू के एपिसोड में, अगर आपको याद हो पहली दूसरी एपिसोड में वो कहती है कि मेरे से आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की, मैं पूछना चाह रही हूँ। अब वो बदतमीजी नहीं कर रही कि तुमने मुझसे ऐसे हम्म। बात, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसने उसको कहा कि मुझसे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं किया, आप आए नहीं, आप लेट हो गए, तो आप मुझे हम्म। बताइए ऐसा क्या हुआ है कि आपने इस तरह मुझसे बात Right. की है। तो Conflict resolution. so, and Hmm. she's like holding him she's holding him Accountable. accountable, but at the same time, she's not exactly scratching his eyes out. She's just being a Hmm. normal person trying to sort things out. Why would you say this? And I think that bit has been very underrated about Farad's writing, or any writer who attempts to showcase a woman responding like a normal woman. Despite having that drama in her life, which is obviously you're telling a story, there has to be drama. But in that drama, वी ऑल्सो नीड टू शो समबडी हु आई कैन रिलेट टू। मतलब मैं हर वक्त यूं करके खड़ी हो जाऊंगी, मैं कोई आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा मुझे से मोहब्बत नहीं होगी, ठीक है ना, बात खत्म, गेम ओवर, रेड लाइट, दैट एंड ऑफ द ड्रामा फॉर मी। फर्स्ट एपिसोड आगे चमाट मारा, ओके दैट्स इट, आई एम मूविंग ऑन, यू आर गोइंग टू जेल, दैट्स इट। आई मीन बट देन भाई उनको मोहब्बतें हो रही हैं चमाटे खाने वाले मारने वाले लड़कों से। Those are okay. Remember that term I used. We're going to move on to Sunn Mere Dil in a minute once we finish. हम्म। But let's leave that discussion for Sunn Mere Dil if you think, because I'm going to talk about. I think you laughed at this phrase I used. नो Dila नो नो, lava. बता दिया आपने। मैंने कहा तब बताती ना तो सही मजा आता, लेकिन ओके लेट्स फिनिश कभी मैं कभी तुम। Okay, एंड you wanted to discuss Auntie Ji ki, and of course my Bushra Ansari, queen your Rabab. queen Rabab is back, and it was a toss up between who I hated more, Rabab or Adil. यार कितना कमीना है ये इंसान। I wanted to go inside the screen and like, dude, you sold your parents' house. How could you do that? How could you like? How evil is he? And how well he justifies the whole thing. And it just shows you how terrible people justify their. That mother created, and I mean, you're a psychologist, you'd probably be able to tell us, but this is a portrait of, he's a proxy husband for her, Hmm. right? Hmm. So, Shugufta auntie, like you can see things in terms of psychology, or Hmm. you can see things if you're a spiritual person, you can think, okay, she's na shukri, Allah ki Hmm. taqseem pe razi nahi hai Shugufta ठीक है, auntie, हाँ हाँ। right? हम्म। So she withdraws favors and withholds love हम्म। according to who pleases her the most. हम्म। So she has created a proxy
husband in the हम्म form of her son Adil. अपने हस्बैंड को जलील करने में वो को कसर नहीं छोड़ती, हर वक्त मेरी खर्चे नहीं पूरे कर रहा है ये आदमी, ये नहीं हम्म कर रहा, वो नहीं कर रहा, ही इज अ गुड मैन. एंड हम्म उनकी डायनामिक, इफ यू सी द वे शी लुक्ड, बुशरा अंसारी इज अमेजिंग. शी हम्म looks as if she's sucking a lemon most of the time, right? हम्म So like this, and हम्म that shows that she's always unhappy. वो हर चीज को नाप तोल रही होती है, she's unhappy. तो हम्म Adil, she's replaced her husband with Adil, and I think that runs throughout Faraz Ishtiaq's work. Frida also had made her son Asher her proxy husband. The reason that she wanted Sarah to be his wife was because हम्म I think she saw some of herself in Sarah, you know, modern, all this मॉडर्न kind of अर्बन stuff. एजुकेटेड हाँ Yeah, हाँ. yeah. आई थिंक इट्स अ So रिवर्स that, फ्रॉइडियन नाइटमेयर yeah. बेसिकली. Is it या okay? I just hate Freud, so I'm. आई थिंक इट्स I mean, fascinating. I've studied him so much. अच्छा. Yeah. So yeah, I mean, this is, you can say it from a psychological point of view, हम्म right? Okay, हम्म oh, Freud, this, and then there is the spiritual point of view. Because some people are just unhappy in themselves because वो राजी नहीं होते. बट इट इज हालांकि दैट इज ऑल्सो रूटेड इन साइकोलॉजी व्हेन वी हैव अच्छा. दैट. लाइक जफा के ऊपर बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि हम्म. जफा के अंदर जो हसन का प्रोफाइल है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग. एंड अगेन हैट्स ऑफ टू द टीम एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु इंक्लूडिंग मुहिब मिर्जा दानिश भाई एंड एवरीबडी हु क्रिएटेड दैट कैरेक्टर. उन्होंने जिस तरह उसको देख बनाया है वो साइकोलॉजिकली इतना एक्यूरेट है. बिकॉज होता क्या है कि जो उसके ट्रिगर वर्ड्स है ना, फूल बुद्धू, दे आर पर्सनली ही इज यूजिंग नेगेटिव. he sees this negative judgment as triggers because his own sense of self is deeply broken. So now he is using this person, Mavra's character, Zara, as this fixer kind of a thing that if she puts the plaster of her love on his broken life, things will be fixed, which is sometimes what abusers do. Sometimes, not always. Usually, abusers are looking for people to control because that is हम्म. the way they feel like whatever's brewing inside of them, that is the way हम्म. they will channelize that emotion to control, whether it's through sexual assault or physical assault. दे फाइंड वेज. लाइक बुलीज क्या होते हैं, बुलीज खुद इनसिक्योर होते हैं तो वो दूसरों को बुली करते हैं. इसी तरह अब्यूजर जो होते हैं उनकी अपनी लाइफ अंदर जो भी उनके होता है ना वो टूटा फूटा होता है. तो जो वो टूटी फूटी चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं वो एक बेचारा कोई उनको मिल जाता है, वो गरीब जारा जैसा अनअज्यूमिंग सा बेवकूफ आदमी जिसको लगता है नहीं नहीं मैं ठीक कर लूंगी, नहीं नहीं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, नहीं नहीं मैं In सकाइट्रिस्ट के पास any ले जाऊंगी. marriage, right? In any ये marriage, भी in होता any है. हाँ. relationship, right? मोस्ट ऑफ द You women don't end up know the becoming person. mothers. हाँ, and the Yeah. women end up becoming mothers Yeah. of the No, men. wait, what is that line? Jung hai, yeah, one of these people, you हम्म will probably know, ke, it is the unlived life of the हम्म parent that या affects the child the most. So we basically, or हम लोग जो हैं, we try and recreate our childhood. हम्म And it's almost automatic. आप देखें ना, हसन अपनी childhood recreate कर रहा है. वही है और वही है. dynamic abuse का, you look at Shirjina, वो भी कर रही है. And हाँ. I love our writers. मुस्तफा I mean, टू, इफ a यू लुक round of एट इट. applause to our यस writers. एब्सोल्युटली. एंड मुस्तफा टू, मैं वही बात जो Yes. मुस्तफा की बता रही थी कि उसका Yeah. सेंस ऑफ, देखें हमारा हर ह्यूमन बीइंग का जो रूट होता है ना अपने वर्ल्ड को देखने का, अपनी फॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स फॉर्म करने का, या अपनी सक्सेस और फेलियर को मेजर करने का, वो इंटरनल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. हम एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लोसाई ऑफ कंट्रोल. हाउ वी व्यू द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन हाउ वी सी आवर सेल्व्स. ठीक है. एंड जितनी हेल्दियर सेल्फ एस्टीम होती है उतना आपका सेंस ऑफ सेल्फ स्टेबल होता है ना. कि मतलब अगर मैंने फेल किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेलियर हूं. अगर मुझसे कोई प्यार नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्दी नहीं हूं. वो लड़कियां जो एक ब्रेकअप पे रुबाब, उनको एक लड़का नहीं मिला, दुकान, वो अपनी दुकान बंद करके वो रो रही है, 10 दिन घर में बैठी हुई, 4 साल से एक लड़के से खामोश मोहब्बत कर रही है वो. ये एक ब्रोकन इंसान है. दिस इज नॉट अ हील्ड Hmm. पर्सन. ठीक है. शर्जीना ऑन दी अदर हैंड, उसने देखा कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, एक ऐसी, हाँ उसका जो थोड़ा सा ट्रॉमा है या बैगेज है वो ये कि वो फर्स्ट चाइल्ड वाला, मेरी Hmm. स्ट्रांग बेटी वो है, उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने, शायद करना She's चाहिए था. used to, she doesn't want to be that one on the outside, right? She's used to be in the inner इन winner. इन वो एक कंट्रोल winner ऑल्सो. circle नहीं होती, winner हाँ circle.
आई she's ऑफ द used to स्टॉर्म, be in the आई winner ऑफ द circle. स्टॉर्म, हाँ। Hmm. तो मुस्तफा के अंदर जो सारी सेंस ऑफ सेल्फ है, जिस क्योंकि देखे ना, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा, मेरी बीवी तब खुश रह Hmm. सकती है जब मैं पैसे कमाऊंगा। इट्स अ विशियस लूप Because दैट that's ही, what his mother is taught. that's what his mother is Okay. taught, and society is also teaching him the same thing, na? Yeah. Society is also Who is teaching him the that? same. क्रिस रॉक ने एक किया था मोनोलॉग के हम्म। कुत्ता हो जाओ लेकिन मर्द ना बनना. In like yeah, which I think was a bit of an exaggeration, particularly हाँ in our culture जहाँ मर्दों की बहुत इज्जत होती है, रोटी खाना पानी हाँ हर चीज हाँ उनको पहले मिलता है. I हाँ। still remember that. हम्म पता नहीं there was a Quran khani or something and my nani जो है, हम्म। I was hungry and my nani नहीं पहले मर्दों को मिलेगा. And I remember going like what. I was 9 years old. But your reaction is very, you feel like coming from a 9-year-old also. I was like, why? Because I tell you what, that confidence to say at 9 years old, why, came Hmm. from my house because Exactly. my father had said, nahi, meri beti pehle khayegi. He हाँ। came out and gave me a plate, right? Yeah. And that tells you that your parents are so much your confidence, या right? या आई थिंक दैट वो बात, सारी बात जो जारा भी अपने जुमले में कहती है कि Mm, क्या समझते हो तुम मुझे, कहाँ से उठा के लाए हो, मतलब तुम मुझे, मैं एक प्रोग्रेसिव लड़की हूँ मैं, और तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, ये सारी बात कहने का जो उसके अंदर mm, हिम्मत है ना, वो उसके माँ बाप की तरफ से आई है। right. तो That's brilliant. इट्स ब्रिलियंट। तो जफा के अंदर जो अब्यूजर की जो पूरी प्रोफाइल है वो इतनी एक्यूरेट है, बिकॉज जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है, जो कि उसके अब्यूसिव फादर की वजह से, उसके पेरेंट्स की रिलेशनशिप की वजह से, Mm. और जब आप अब्यूसिव पेरेंट, अब्यूसिव हाउस होल्ड में ग्रो अप करते हैं ना, तो आप ब्लेम करते हैं खुद को, बिकॉज Would you classify what Mustafa has gone through, in which he was constantly degraded हम्म and he couldn't achieve at school, हम्म that he also was a victim of some, not maybe, chalo, I don't want to classify everything as abuse. Maybe that's हम्म। wrong. But he was definitely neglected and he's trying to make up for it now. I think that kind of neglect and emotional atyachar, let's use that word, Yeah. that kind of emotional torture that brown parents and especially mothers and even fathers, बाप भी इसमें, वैसे उसका बाप भी complicit है, मुस्तफा की Yes. जो एक broken, या उसकी जो एक excessive placing value on money है, जिसमें उसकी बीवी जो है वो कह रही है कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, हम सही है फिर ओके, बट नहीं, Mm, उसको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। इसमें उसके बाप का भी फॉल्ट है। तो व्हाट आई वुड क्लासिफाई दैट is kind of, I think that's a very signature of typical Pakistani South yes. Asian mentality, जहाँ पे मर्दों को, जो आई थिंक क्रिस रॉक जिसके ऊपर शायद रिफर कर रहे हैं, वो Yeah. ये कि बंदा कुत्ता हो जाए और मर्द ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में वियर्ड सी डाइकोटमीज हैं मर्दों के ऊपर। तो बात मुझे लगता है बहुत जरूरी है करना, जिसमें हमें ये बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमने मर्दों पे इतनी वैल्यू डाली हुई है ना, कि तुम Mm. हाकिम हो, मुहाफिज हो, तुम हमें बताओगे कि सही क्या है, फैसले करोगे, बड़े बड़े फैसले तुम करोगे, छोटे छोटे फैसले हम पे छोड़ दोगे, तुम्हारा दर्जा बुलंद है, तुम्हारा दर्जा फिर बुलंद है। नोटिस तो ये करके. सारी बैगेज हमने मर्दों पे डाला हुआ है। लेकिन हम क्या क्या नहीं कर रहे साथ साथ, ना हम मर्दों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बचपन से सिखा रहे हैं, मतलब जब, और मैं ये नहीं कह रही कि 40 साल के मर्द को बाप बैठ के सिखाएं, थेरेपी उसका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन जो बचपन से हम लैंग्वेज यूज करते हैं मर्दों के साथ, लड़कों के साथ, बॉयज डोंट क्राई, तुम लड़के हो तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम लड़के हो तुम ये करो, भाई तुम लड़के हो, ये बात रहने दो, डोंट असाइन वैल्यू ऑन दैट जेंडर फॉर नाउ, बट जस्ट से बेटा रोना आ रहा है, क्या बात है, लेट्स सिट एंड टॉक, क्या मुश्किल है ये कहना, इसमें हम्म, कहाँ से जेंडर डिबेट आ रही है, ये बच्चा है ना, रो रहा है, बात कर लो उससे। और बच्चों की जो हमने इंटेलिजेंस को जिस तरह हमने, बिकॉज पाकिस्तान में, सतत मुझे नहीं मालूम कि आप कितने अरसे से हम्म, पाकिस्तान में आपने इस चीज को एक्सप्लोर किया है, यानी आप ट्रिप्स लगाती होंगी जब भी, तो I'll chime in once you say it. Yeah. या तो आपने, मुझे नहीं मालूम कि एजुकेशन सिस्टम आपने जो देखा है, हम मशीन्स बना रहे हैं, हम एजुकेट नहीं कर रहे बच्चे। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो एक Mm, भेड़ बकरियों वाली रेस है। भेड़ बकरियों की तरह हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आधे से ज्यादा बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे उनको फिर भी वैल्यू नजर आ रही है। पाकिस्तान में ना उनकी कोई वैल्यू है, टीचिंग ये वो ये सारी चीजों में भी बहुत कम जगहें हैं पाकिस्तान में, आई वुड से, और वो भी ये कि आप mm, बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो आप उस जगह जाओगे, बच्चों को भेजोगे। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स हैं, मिडिल क्लास के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं,
वहां पे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बच्चा किस चीज में एक्सेल कर रहा है, But उसको आगे कैसे बढ़ाना है। is it the school's responsibility though? इट इज, Right? इट्स द एजुकेशन Do you सिस्टम। think so? I think that जहाँ रोटी नहीं मिल रही खाने को तो वो कहेंगे मैं कि तो मिडिल क्लास लोगों अच्छा की ये बात भी कर रही कह हूँ ना रहे हैं। सदफ। मैं हाँ तो ऐसी हाँ। बात कर रही हूँ कि जो 25-30 हजार दे सकते हैं स्कूल के। ये दिस इज अ सर्टेन एटीट्यूड। हम लोग एक तरफ से कहते हैं भाई, हम लोग, टू रिपीट व्हाट यू सेड, कि मर्द लोग जो है ना उनको ज्यादा अहमियत मिलती है पाकिस्तान में, राइट? हम्म। बट एट द सेम टाइम there is also a culture amongst, and particularly middle class households, not elite ones, हम्म। middle class houses, के treating men, what my father would call it is, हम लोग मर्दों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। दिस हम्म। इज के ताकि हाँ, मैं इस वो, पॉइंट पे आने वाली थी, हाँ, या मेंटल हेल्थ वाली चीज ताकि पे, हाँ। वो ना बन जाए, वो रफ एंड टफ बने, क्योंकि उन्होंने हम्म। घर आगे चलाने हैं। एंड देन आई एम सेइंग लाइक यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लड़कियों की तरबियत पे कि बेटा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ये वो, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हेट दैट वर्ड फ्लेक्सिबल, बट इट एक्चुअली इज यूजफुल, राइट? हम्म। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल इतना नहीं कि आप टूट जाए, राइट? लाइन होनी चाहिए जिसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, चमाट होना चाहिए, Right. फिर होना चाहिए If you चलो। have a healthy relationship, be flexible. If हम्म। someone is abusing you and hitting you, I'm sorry, there's no या flexibility. दैट्स नॉट द प्लेस टू बी There is फ्लेक्सिबल। that other attitude कि आप ना लड़कों को ना बदतमीजी से पेश उनके आए और उनको मारे पड़ती हैं, हम्म। right? And हम्म। stuff like that. Whereas in the पंजाब वो लफ्ज है ना, ये बेटी का धन है, पराया धन है, पराया इसको धन हाथ है, नहीं हाँ, और लगाना। पंजाब में नहीं है, वैसे भी है, हाँ। Yeah, ये like I'm असल not, असली घर आपका yeah, ससुराल है। yeah. So what it is also people, like we talk about the bad things. There's good and bad side effects from every culture, या। right? So there is this thing कि ये प्राया धन है, हम्म। इसने जाना है, and हम्म। इसको हाथ नहीं लगाना। हम्म। So that is another thing कि in our families, in our culture, वो बेटियों को, हाय इसने जाना, इससे काम नहीं लेना, that's another thing। Believe हमारे it or यहाँ not, नहीं होता ऐसा। हमारे yeah। कहते बेटी चलो सारी ट्रेनिंग करके जाना, तो मतलब वरना ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या क्या कि करवा वो के भेजा है। ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन काम नहीं ज्यादा लेते, क्योंकि आगे इसने काम बड़े करने हैं, वो, या हाँ, वो हर थिंग्स घर का लाइक अलग दिस। होता है, वो हर घर का अलग होता हर है। साइकोलॉजी, यू नो। हाँ, हर घर की एक 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 थॉट I प्रोसेस होता है। want to talk about Shugufta auntie and Rabab, right? You डूड, notice सो Adil सेटिस्फाइंग बट picks, सैड। yeah, but हम्म। Adil picks these demanding women हम्म। because he's used to his mother being a या demanding woman, right? And या Farhad Ishtiyaq, thank you. हाँ। नहीं, और ये जो मुझे उनका जो वो मोमेंट लगा ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा और देखा भी मैंने कि बड़ा सेटिस्फाइंग था कि रबाब ने उसको Hmm. सुना दी और उसकी It was माँ रो not रही थी। enough. I don't think एक it तो was आई enough. डोंट थिंक इट्स इनफ, आई थिंक देयर इज मोर टू कम, बिकॉज आई थिंक अभी उसका Yeah. पूरा भांडा तो खुला नहीं है। बट पता नहीं, मुझे पता है ज्यादा शगुफ्ता को रोते हुए, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ड्रामास, दैट्स द ब्यूटी ऑफ Hmm. दिस राइटिंग, ऑफ फरस राइटिंग, यू नो, व्हेन यू humanize with somebody, again, I'm not saying do it with a proper out Hmm. and out abuser like Hassan. For Hassan you need to know what's wrong with him, but with Right. Shagufta also we see what's wrong with her, and obviously her crimes are also pretty crazy. Not believing her son, throwing him out, prioritizing financial security over everything else, which is obviously very toxic. So she's not an abuser, she's toxic. But when you see through what's going on, she's crying, she's not telling her husband because obviously she's embarrassed कि मैंने इतना बड़ा भंड मार दिया, मैं इस गधे पे बच्चे पे ट्रस्ट करके बैठी हुई थी, और वो कैसा कैसा झूठ बोल रहा था, अल्लाह माफ करे। मैं तो उसके झूठ पे ही हैरान थी, क्या मजे And से स्टोरियां गढ़ Imad, रहा था वो, अल्लाह। Imad Irfani is like So this good. perfect He is so narcissist, good. एक तो यार, he is so distractingly good looking. I always say है that. ना? And somebody was like, it's so difficult to hate Imad Irfani because it's so difficult to hate Adil because he's so good looking like Imad Irfani. No, And I can hate it. yeah, I I can. can hate It's him, not and I difficult at thought, and all. I personally Yeah. think it was a brilliant decision to cast him. शुरू में I Hmm. was a bit like, why him? You ये know, क्या they हो could have रहा been है, better. right? Yeah. Better act. No, I feel like they could have been a better actor to play Hmm. Adil. But now, and I realized that initial जो भी rickety थोड़ा सा था, अब ठीक हो गया है. I think that Hmm. the fact that they chose such a gorgeous guy to play Hmm. someone like Adil was so important because it tells you, don't believe, don't judge a book by its Look, cover, yeah, which is what I you was did in about to case say of, that. yeah, Yeah. when you did it for Mustafa, and now you're doing it for Adil. And I think that this learning, यार मुस्तफा प्यारा भी है। दोनों भाई वो अदील की लड़के। तरह क्लासिक प्यारा नहीं है ना, उसके वो बाद नहीं, में रहते अदील हैं। अदील इज अ लिटिल टू गुड लुकिंग ना He's वो। too good अगर looking, man. He's या like some he's Clark Kent वाला good overpowering, looking.
ओवर Yeah. पावरिंगली गुड लुकिंग, हाँ। लेकिन Yeah. फहद की तो ब्यूटी थोड़ी सी वो है ना हमारी वो। अस, Relatable. हाँ, It's असल में वो relatable. हमारा कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स भी तो है ना। फहद हमारा बेचारा देसी मुंडा है, और अदील जो है वो ही क्लार्क कैंट, तो वो फिर हमारा वो भी Yeah. कॉम्प्लेक्स आ जाता है Well, ना। well, I think I've seen some comments about this, but that's the point, isn't it? कि या Adil is a trap. He's a beautiful trap. ही इज अ जब आप ब्यूटीफुल, कदम रखोगे, you will fall you into a would pit of fall stakes. into A pit बिल्कुल। of stakes. He's what a, did what did yeah. you think of the shagufta and the whole Adil You know exploding? what? I think I should say queen with a K. मैंने Hmm. ट्विटर पे तो क्यू के साथ कही थी, my queen, because she's really mean and nasty. And my friends were like, I think you and I were discussing, and I said, look, uh, uh, from my favorite Govinda, right? Hmm. Bollywood ka, and sometimes you need a shaka to Hmm. fix a tiger bhaiya. हाँ। क्योंकि बॉलीवुड के विलन्स का नाम टाइगर और शाका ही होता शाका। था ना। Yeah. मोगेम्बो शाका। So you need Mogambo and you need Tiger. You can't, मुस्तफा अक्लमंद आदमी है, सो इज शर्जीना। वो इनको छोड़ के दोनों को, इट्स नॉट माय बिजनेस अगेन। जो ये हम्म। इस टाइप के साइकोटिक हरकतें कर रहे हैं, लेट देम हम्म। फिक्स देमसेल्व्स, लेट देम या डील विद इट, ट्राई एंड फिक्स देम। राइट, या बार बार नहीं वो है अपने माँ बाप के घर, लेट मी, ही सेड ओके दैट्स इट, दैट्स माय बाउंड्री, नहीं, वो तो आई एम चले लीविंग। एक्स कम्युनिकेटेड है, उनको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है। नहीं नहीं, ये वो बहन आई थी, एंड ही सेड आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू हाँ, दैट, आई तो वो थिंक। तो एक्स, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है वहां पे, नहीं, उनको बट मालूम नहीं हेल्थी है। पीपल, हेल्थी पीपल बार बार जाके लड़ते नहीं है, बार हाँ बार दे डोंट ट्राई एंड फिक्स थिंग्स, राइट? हाँ सो हाँ दे आर स्टार्टिंग देयर ओन लाइफ बिकॉज दे हेल्थी पीपल, लेट दीज टॉक्सिक पीपल डील विद themselves. हाँ। Whereas so you need someone like Rabab, हम्म। and they are attracted to each other. अच्छा, उनकी जो लव लैंग्वेज है, मुझे इतना मजे का, इतने झूठ एक दूसरे के साथ बोलते हैं, एंड देन द दोनों इनर परले मोनोलॉग्स, दर्जे के झूठे है ना? खबीस दोनों, अल्लाह। हरे And बोल, I हरे बोल। love how Farhat Ishtiyaq contrasts their relationships. Well, हम्म। उनका सीन आता है, and then you have this hollow, झूठी relationship based entirely transactional, हाँ, or you know. अच्छा, आई थिंक इट Adil ऑल्सो is not. शोज द डिफरेंस बिटवीन, जी जी आप कुछ कह रही थी, No, कंप्लीट no, योर, go ahead, go नो नो ahead. कंप्लीट योर ट्रेन ऑफ थॉट, Okay, फिर मैं बताती Adil हूँ। is next week. He's picked up on it. He's not stupid as well. हम्म। So the dance is continuing. वो जो dance हम्म। of the वो seven whales नहीं होता? मेरी प्यारी सी बीवी। Oh, Adil, why are you so upset? Calm down, honey. Oh God. Acha, Oh come on. God. We have to give the actress a round of applause, right? I Yeah. didn't believe you at first. आपने मुझे बोला कि सदफ वो बहुत अच्छी थी जिंदो में. In And I Jindo, said, she this was too girl, good. Yeah. No, no. no, But she she was. has owned this role so well. I love her. हाँ हाँ। और अब तो वो मुझे लगता है वो उसकी एक कॉलिंग कार्ड बन गया है रबाब। वो जहां जहां Yes. जाती है ब्लॉगर्स उसको बुला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, बिकॉज शी इज सो ब्यूटिफुली मजेदार विलन डूइंग है. रबाब, Yeah. या नो, व्हिच इज वेरी गुड विलन। एंड आई थिंक दैट Yeah. इफ यू सी हर इन जिंदो शी इज अनरेकग्नाइज, मतलब इफ यू हियर हर इन जिंदो, देखने में Hmm. तो चलो इतनी नहीं है, बट इफ यू हियर हर इन जिंदो शी इज अनरेकग्नाइजेबल, यू कैन नॉट, शी इज टॉकिंग इन अ प्योर वो थर और थर पारकर वाले तय, एक ही दे होवे ना अम्मा, ऐसे करके बात कर रही है वो, और वो लग ही नहीं रहा कि ये वही लड़की है। मगर यहाँ पे मुझे इसका सब वो उसका इंग्लिश अनोइंग लग रही थी, बाकी तो भाई शी इज सो वो गुड। तो look, I have brought up you are a master of both Urdu and English, right? I can't claim to be a master of Urdu. हम्म। I do try, but हम्म। I definitely, I was brought up in England, हम्म। born in Lahore, right? हम्म। But brought up in England, and all my schooling, university there, and then I went to America, and हम्म। this is where I live. So हम्म। the English is a little bit, but it's like saying, I was talking to my husband, and he was like, अफ्रीका में जूलियस सीजर शेक्सपियर का लगाएंगे तो will they import Italians to play them? No, they'll get the characters and the actors that are या available. या And no, this is not a correct accent. It's not correct some of the pronunciation, but I'm enjoying it. And I don't want to, I mean, being a grammar Nazi, it was kind of fun. I liked it. ओह माय गॉड। Anyway, I love that girl. Naima Butt is doing really well, and I think she's going to be a good addition to, our viewing schedule. Our I slew hope to of see new actors, it. and no, I enjoy both of them, watching them, like Hmm. I enjoy hating them so much. And like I never thought that I would enjoy a B track, they're Hmm. technically a B track, right?
of a story so much, but they're so enjoyable. And watching Adil expose himself, I think that, oh, that didn't come out right, but I'm Hmm. just saying that I'm just saying that watching Adil kind of fall into his own traps is so satisfying. And I think that's again good writing, because you don't want him to, they need not be like a big exposure. और पता है मुझे, जो मैं सोच रही थी पूरे ड्रामे में ये बात, वो जो उसने Hmm. ओवरहियर किया उसको, हमारे यहाँ ये ओवरहियर वाला ट्रोप इतना कॉमन है, इट्स सच एन इजी वे आउट फॉर राइटर्स के, ओ शी ओवरहर्ड सो देयरफॉर नाउ शी नोज. I think that Farhat uses it very well. She used it very well in Humsafar, so यकी का सफर. वो जो ओवर हियरिंग वाली चीज होती है, बिल्कुल सही मोमेंट पे वो लेकर आती है, एज अ व्हाट वुड आई से, एज अ Built प्लॉट it to मूव, a climax, या right? प्लॉट मूवमेंट डिवाइस जो वो लेकर आती है, वो बड़े सही मोमेंट पे लेकर आती है, जब भी वो ये ओवर हियरिंग वाली चीज लेकर आती है. जूबिया जो है, वो आधी बात सुनती है जब उसका भाई आता है I उससे love मिलने. Dr. Zubia. हाँ, She was one of एग्जैक्टली. my favorite Yeah, heroines. serious, and that drama, like, oh my god, love. So I think that वो जो जिस तरह उसने उसको दिखाया कि उसकी माँ बैठ के उसकी पूरी बात सुनती है ना, अदील की, वो Hmm. खुद ही सुना उसने. मतलब अगर उसको कोई और बताता, मतलब उसका मियाँ बताता कि मैंने ये सुना है उसे बोलते, वो यकीन भी नहीं करती, आप तो ऐसे मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हैं. उसने खुद सुना, बहू के मुंह से भी सुना, बेटे के मुंह से भी सुना, सही हो गई, सुथरी हो गई. लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, पता है सदफ, मुझे दुख हुआ. मुझे होता है कि औलाद का जो इस तरह का होता है डिसअपॉइंटमेंट, जो आपने खुद औलाद को सेटअप किया होता है, आई होप एट सम पॉइंट इन टाइम शी रियलाइजेस. Hmm. रियल लाइफ में लोग रियलाइज नहीं करते, It's a लेकिन good ड्रामे point. में हाँ रियलाइज नहीं करते कि हमने खुद ही अपनी औलाद के साथ ये किया है. वी हैव टर्न दिस फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर इनटू व्हाट इट इज, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक हमारे यहाँ पेरेंट्स अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते. हम अपने बच्चों को तो बहुत वो करते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और यार, मेरे मॉडर्न तो डे. अमेरिकन बच्चे हैं, वो आपके तो अकाउंटेबिलिटी बहुत, हर वक्त आपके तो लेते आप ही हैं। के ऊपर करते हैं. मैं ब्राउन उसमें बात कर रही हूँ, मैं ब्राउन कॉन्टेक्स्ट में I बात कर रही wouldn't हूँ. dare, I wouldn't dare असल hold में my आप father लोग ना सदा accountable for anything. सिविलाइजेशन, And सिविलाइजेशन वाइज आप लोग, Alhamdulillah, I don't have to. He's a नहीं, brilliant बट man. सिविलाइजेशन वाइज आप लोग हमसे जरा 2-4 लीप ईयर्स अहेड हैं, हम लोग जरा पीछे हैं पाकिस्तान I में. don't know. I don't know. I'll sometimes I feel that आप लोगों we're more open in our हम्म. dialogue, but हम्म. not everything that comes out of our mouths इज is द good. ट्रूथ. Yeah, I'm sorry. हम लोग बड़े open हैं dialogue में, लेकिन हर हाँ, dialogue की वजन is not that is much. not that great. Acha, but one last point on Adil and Mustafa is what I wanted to make for Kabhi Main Kabhi Tum, is Hmm. that I felt that this contrast between Adil, like you very rightly pointed out, between Adil and Mustafa as two individuals who are in relationships, but one is treating that relationship as transactional, and he was very open about it from day one कि वो मेरी मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, और उसका बाप उसको कहता भी है कि तुम It's a उसको, career move. या Yeah. इट्स अ करियर मूव, लाइक कि तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है. उसने अपने बाप को भी एक नाकाम आदमी कह दिया था, बिकॉज ही वाज Hmm. अपोजिंग दिस मैरिज विद रुबाब. और वो डे वन से मैं पता था कि वो इट्स अ करियर मूव मैरिंग दिस गर्ल, but he would become this level of a cheater, corrupt person, this we didn't know. So I think that to show that, and to show another man also trying his best to move up in his career, but doing it for his wife and for his, and I think that, what, again, just my last word now is that I Hmm. think we've placed, वो जो हम बात कंटिन्यू कर रहे थे ना, मैं उसको बात करना चाह रही थी कि हमने मर्दों को जो बना दिया है ना सोल ब्रेड विनर्स. आई थिंक दैट देयर इज अ वेरी इजी वे आउट ऑफ दिस. आई थिंक दैट वी आर ट्रेनिंग women to become breadwinners also. We have pressurized men into becoming breadwinners. There's a huge pressure of being materialistic in today's world, way more than probably even 30 years ago, 40 years ago. And I think that what we're not teaching couples, and we're not teaching families, and it's not that मैं पेरेंट्स को कहूँ आप सिखाएं बच्चे को, उनको कैसे पता चलेगा, डायनामिक्स ही बदल गई हैं. आई थिंक what we're not teaching parents, young men and women, is how to work together as two uh, working parts Adults. of a relationship, whether it's professional, whether it's personal, whether it's parental. हम लोगों ने अभी भी मर्दों को उस ट्रैप में रखा हुआ है. तुम पैम्पर चेंज करोगे बच्चे का, यार अगर तुम कर दोगे तो क्या हो जाएगा. मतलब अगर हमने अभी तक मर्दों को ये नहीं सिखाया है, और आई नो वेस्ट वगैरह में तो ये चीजें हैं कि वो लमाज क्लासेस लेते हैं, और वो बर्थिंग में नहीं, प्रोसेस में but मौजूद होते even हैं. here,
even here, if you look at the read-its and you look at the reason for divorce, they Yeah. will say, I mean, there's so many funny No, no, of TikToks about, course. हाँ yeah, हाँ. about this kid. The woman says, he was just not there. I was a single parent in a Yeah, marriage. Yeah, yeah. I was looking after the kids and he was sitting on the side. Yeah, so And you're many kind stories of like everywhere. Yes. shocked. Yeah, Yeah. true, 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 true. So I feel like we वहां पे, हाँ ये है कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वहां पे कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं शायद, पता नहीं. Hmm. लेकिन पाकिस्तान में भी हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब सारी मर्दी बैठे हुए सोफे के ऊपर एज देयर वाइव्स आर गिविंग बर्थ. ऐसा नहीं है, बहुत सारे हस्बैंड्स बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुझे लगता है Yes, mine उन is. मेन आर, और मैंने बहुत ऐसे इन्वॉल्व हस्बैंड्स देखे हैं जो अपने बच्चों को पूरी तरह डेडिकेशन के साथ पाल रहे हैं. लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत हस्बैंड्स देखे हैं जिन्होंने Hmm. अपनी बीवियों के ऊपर सारा बर्डन, इमोशनल, इवन इफ नॉट फाइनेंस, हाँ ठीक है मैं नौकरी करता हूँ, अब मैं नौकरी करता हूँ तो मैं नौकरी करता हूँ, मैं सारा दिन नौकरी करता हूँ, मैं रात में भी नौकरी कर रहा होता हूँ, मैं घर जाके लेटना चाहता हूँ, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, बच्चे मेरे सामने नहीं आए, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम ना सुनाए, और अब मैं लेट के बस मैं या तो सिगरेट पीऊंगा I या मैं think मोबाइल this is देखूंगा. that thing, right? Is this is a disease, हम्म. and kind of withdrawing from the family, and they use it to control because जो father का असर है, we've seen this throughout, and particularly Farhat Ishtiaq's work, हम्म. is that a positive father role. Even the Queen Rabab, Queen क्यों है? का Father, बाप. हाँ. उसका father is on her case, not her हाँ. mother. Mother's हम्म. disappeared from her या life, शी which इज नॉट देयर. हाँ. normally, yeah. And हम्म. she goes, I'll visit my mother. Like, and father is after his daughter. And he's also, I think a little bit of that proxy wife thing instead of like, he's kind of controlling as well. Have you हम्म. noticed? या He या doesn't want her to be happy he hasn't given her a good tarbiyat. या But, he, भाई he and शादी she कर ली, उसको are up छोड़ there. दिया. उसकी Yeah. शादी, उसने जब खुद शादी कर ली उसके बाप ने, Mm. तो बेटी को तो फिर उसने वो प्रेजेंट होके तो नहीं पाला ना, उसने वो शी हैड टू प्रीटी मच रेज हरसेल्फ. And but the thing is, he sees in her himself. He gave her a lot of confidence, but the wrong kind of confidence. या. Acha, this is okay. I'm going to contrast Shajina. Last word, because we need to do Sun Mere Dil. यस. Uh, Shajina and Rabab, apart हाँ. from the selfishness, right? या. Shajina is not listening to her father when it comes to Mustafa, या. whereas Rabab is very much listening to her father. Now, शुरू हम्म. शादी करते वक्त she didn't, but when she एंड दैट listened, वाज अ रिवर्स देयर. शर्जीना को Hmm. शादी के वक्त उसने कहा था कि मत करना शादी, एंड शी डिडंट Hmm. लिसन टू हिम. देन बिकॉज शी इज लाइक, नहीं ठीक है, आई Hmm. वांट टू बी विद दिस पर्सन. या. It's very interesting, all these little things. And I'm sometimes मैं थोड़ा सा डरती हूँ blue curtain से. You know that thing where you go, English literature का professor says the हम्म. blue curtains represent the depression in his soul. And आगे जब writer आता है वो कहता है, no, they're just blue curtains. And that's what I fear when I'm when I'm looking too deeply into a character, because this is what I did with Jaffa. And it like haunted me, because when Sigmund Freud was asked, when he was like, because he used to Mm. smoke cigars, and obviously he talked about phallic symbols and what it meant and all of that, and Mm. how people get fixated on that. And one of his students during a class said, "But sir, don't you smoke a cigar? Isn't that a phallic symbol?" He said, "Sometimes a cigar is just a cigar." Just a cigar, right? So, But but look, let's give a round of applause, a metaphoric one to Smira Fazal, to Farhat hmm, Ishtaq, and all our great बिल्कुल, writers. बिल्कुल. Because this is what, when you start imagining a character out of the context of the drama, Hmm. the writer has hit a home run. हम्म. वो सिक्सर मार दिया उन्होंने. फरहत इश्तियाक ने तो फॉर श्योर, फरहत इश्तियाक को तो Yeah. मैं कहती हूँ कि उनको उन वो जितनी कॉमन प्लेस और सिंपल सिचुएशंस को लेके चल के उसको बनाती हैं, और फिर आई थिंक कि उनको जब एक ऐसा एक्टर मिल जाए, फहद मुस्तफा जैसा, हम्म. जो कि सब कह रहे हैं नहीं आप इसकी तारीफ नहीं करेंगे, अब मैं भाई वो खा गया है ना सब कुछ, क्या करूं मैं, वो सब पूरा कुछ शो खा गया. उसकी वजह से रन हो रहा है. हाँ, रन हो रहा है. और वो एंकर है शो का. मतलब मुझे बिकॉज सॉरी टू से मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन अगर ये कभी तुम आपने जावियार को दे दिया होता तो क्या होता. बताएं सदफ, आप मुझे जवाब दें इस बात का. हैं. I don't want to be mean, but I think it would have नहीं. been a flop. But there you go. I think Xavier is gonna have to learn. I've seen him in Hum Dono, ही डजंट हैव and व्हाट फहद हैज. बहुत no. सारे, अब जावियार की बात नहीं मैं कह रही, बहुत Hmm. मेजोरिटी एक्टर्स के पास वो विट, चार्म, एफर्टलेस किस्म की जो टैलेंट है, Screen presence.
स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंस। प्रेजेंस और ऑरा करिश्मा रिज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो नहीं है जो फहद के पास है। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई ही डज दैट लाइव शो कॉल्ड जीतो पाकिस्तान, एंड ही हैज बीन डूइंग इट फॉर सो हम्म। long, and he's a massive hit, like it's one of, I think, ARY's biggest shows or whatever. There is a reason, because he is But that person. he's very laid back about it. Have you noticed? Yeah. Because Hania is everywhere on social media, and I feel that her PR team is working as Over they time. should. Yes. Yeah. As they should. If she Yeah. didn't, I would be mad at her, right? Yeah. Because no, this is part of being a star, is to be wise uh, about things. So hmm. good for her. Good Hmm. for Naima Butt. Good for Imad Irfani. They're taking full advantage of this moment as they should and as they Hmm. deserve, Hmm. right? Now, but Fahad is a lot more laid back about this. I don't Hmm. see him everywhere. Halanki, he is the driving force behind But this serial. Yeah. he did a shoot with Faiza Mm. Saklan, which I They think were that so cute. They were so cute in I that think one. he's meant for bigger things. I was a bit surprised Yeah. at his choice of this, but I think वो probably pays good money, and why not? If you're getting good money, then why not? But I think that Fahad is once in a lifetime sort of an actor. तो आई थिंक कि हमें ऐसे एक्टर्स जब मिलते हैं और फिर हम उनका ऐसा काम देखते हैं, तो फिर ये देखें, ये हाइप होता है, जो कि फवाद, Okay, सुन and रहे हो आप? those who think that हम अब तारीफ कर रहे हैं, look back at his past work. He is one of our actors that has अजीब से एक, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर, छोटा सा टेलीप्ले था उसका, हम्म। सचल और सचल और सबरीना. इट हम्म। वाज सो क्यूट. आई स्टिल, हम्म। इट्स इन माय आईज, राइट? हम्म। गर्ल गर्ल उसकी मंगनी हो रही होती है, whatever, the girl is running around playing with chickens ना. तो हम्म। his friend goes with, तुम्हारी किस्मत इस मुर्गी से बदतर है. The chicken is better off than you. He's a कम से कम better off chicken than को you. लिफ्ट करा रही है ना. हाँ, His face, but तो how this iconic goodness. was he? Like in all of हम्म. the roles that he's done, he हम्म. was iconic in मैं अब्दुल कादिर हूँ, नहीं हूँ, हाँ, हूँ. एंड मैं हूँ, अब्दुल कादर मैं हूँ. अब्दुल कादिर हूँ, एंड मस्ताना माही और सरवत कंकर तो नजीर हूँ. सरवत नजीर हूँ. We haven't seen in ages. Where is यूं she? ही, हाँ, वेयर इज शी, व्हाट शी डूइंग? प्लीज, वी नीड टू राइट better roles, we need to, and I think that Fahad was also driven by so much of his own motivation to be a good actor. When he tells हम्म. us, when he told me and he told some stories in the different interviews of him that I saw, and whatever I've known of him from other people in the industry, is that he's somebody who's truly passionate and loves what he does. I think people who are not that passionate, उनके पास फिर टैलेंट, उनको वो ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते अपने अंदर से. तो यू हम्म. हैव टू लव दिस क्राफ्ट टू रियली, यू हैव टू बी मैड अबाउट वांटिंग टू डू दिस, that to survive how stupid and how silly the industry can be sometimes. Like I faced this as a writer, like I've faced rejections and I've faced difficulties, You have to and have that passion. यू हैव, Passion होना लाइक आई वांट चाहिए. टू टेल द Yeah. स्टोरी, अब मैं कुछ भी Yeah. करके ये मुझे स्टोरी सुनानी है, मेरे अंदर वो पड़ी रहेगी और मुझे उसको बाहर निकालना है. तो अब ये एक्टिंग के लिए भी शायद यही होता है कि अब मेरे अंदर ये एक चीज है, मेरे अंदर ये एक्टिंग का भूत है, अब मुझे निकालना है इस भूत को, अब मैं क्या करूं? अल्लाह की तरफ से होता है, बट होता कुछ है. आप भी, you have to respect your craft. And हम्म. look, Xavier is not as terrible as maybe I sometimes say. I हम्म. think that he could improve if he I think will he's humble very good and looking. take I on think, some. no, I think he's got some presence, because I think, but I He think he needs does. to like lose weight maybe, and seem a bit slimmer, because he looks older for his age. Like I really liked him in Qissa Mehrbaano ka. Yeah, that one. He wasn't bad in that. And I think Hmm. what has happened is that I think, his dad is guiding him too much. Sometimes it's okay to let your child swim, right? I think Abdullah Kadwani also has fallen in that trap. Hmm. Asif Raza Mir has fallen in that trap. I think he's also dictating Hmm. his son's choices, maybe, because I think if a star kid होते हैं ना, तो वो star parent का, I think that's the same Abhishek Bachchan curse, that the father is too big for the child to make anything. So whatever the child will do will be measured against that. So It is a curse. It is. I it feel is, it is bad a for them difficult cross sometimes. to bear. But the thing is, कुछ ज्यादा ही एडवांटेज भी तो नहीं ना लेना हाँ, चाहिए. ये भी है. वो हम्म. go for छोटे छोटे roles. Maybe not everybody is an organic actor. Sometimes it takes time, right? हम सब. Yeah. Which brings us to Sun Mere Dil, where the junior Finally. Kadwani, yeah, where the junior Kadwani has some bits to play as Maya Ali's brother. So your take, Sadaf, on Sun Mere Dil, and be brutal. Well, okay, I will be brutal. First of all,
Maya Ali is absolutely gorgeous, and the fact that she is called Sadaf and Wahaj Ali, the beautiful one, it keeps saying nice things about her and is very attracted to her. मेरा दिल को बड़ा तो बायस हो गया आपका ओपिनियन, तो आपका I ओपिनियन am बायस हो telling गया you, सदर। I am winning. वो बार बार सदफ आपकी बेटी है, and I'm like, yeah, keep saying it. इतने खूबसूरत लोग जब आपका नाम और आपकी तारीफें, उसामा खान as well, right? हाँ। He's willing to kill himself for Sadaf, and I don't blame him, right? Okay, that aside, let's just say this, okay, there's a lot of stuff that I wish they wouldn't hype up these dramas the way they do. Okay, drama of the century, this is gonna happen the way the Kodwanis do. थोड़ा सा ना वो इतने एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, and I knew from the beginning ये जितना शोर मचा रहे हैं, I'm sorry, दर्शन छोटे निकलने हैं, and that's हम्म। exactly what happened. Yes, हम्म। they have invested money, they've got another big house, हम्म। and I'm gonna say Wahaj Ali, he has done the drunk acting, right? हम्म। A person who's drunk. Number one, I don't know how people do this, right? You हम्म। know, South Asians cannot handle liquor the way that Caucasians can, right? We have a Yeah. flushing reflex. There's a lot of other things. We just simply cannot handle alcohol the way they हम्म। can. Yet Yeah. he is managing a multi-million dollar empire, and good for him because I cannot take antihistamines because they cloud my brain. So गुड फॉर यू राइट मैं पैरासीटामोल ज्यादा ले लूं तो मैं सो जाती हूँ सो आई डोंट नो ये इन लोगों के पास एक डिफरेंट दोस पीपल दैट कम ऑन स्टेज एंड से well I was doing drugs and I was doing alcohol but now I'm free and yet you have this multi-million dollar career so maybe Yeah, he's ये वो one of बच्चे those. जो कहते हैं हम पढ़ नहीं रहे थे बट पास हो जाते हैं फिर वो। Yeah. So हम्म। this is the trope I think we were going to discuss of the demon lover, right? हम्म। And this is from anybody who is, I know you find it hilarious, but I it's find it actually not. hilarious. I know. Hilarious. So what it is where do you think that thing about tall, dark, and handsome and all this kind of stuff comes from? हाँ। There was throughout history, I think women have not had their choice of who they married, right? हम्म। So, and often married to older, powerful men, particularly in, uh, you विक्टोरियन know, एरा। if you marry in a certain class, and that हम्म। class is the one whose history we read about, हम्म। right? हम्म। So these days, people will not understand it, but if you have read a Victoria Holt हम्म। novel of a हम्म। certain age, those things were in novels, even in all these romances. He's an older millionaire. He's got हम्म। money, he's older, he's more experienced, he's more mature. ब्यूटी एंड द बीस्ट बेसिकली, Yeah, हाँ। Beauty and the Beast, right? या। But हम्म। the Beast also has to learn to soften up. So this हम्म। is basically another Beauty and the Beast kind of deal, the demon lover, all that kind of stuff. And I'm sorry, but it really annoyed me Demon because lover I is didn't so like funny. the way he was talking about either you go all the way, you don't try and हाँ। soften it up. And या। they're trying to soften and they're trying to make the edges of that character nicer. ये हम्म। जो बिलाल अब्दुल्ला है ये मे बी अ गुड बॉस ड्रंकननेस में वो कहता 50% के बेनिफिट्स दे दे which is cool, right? I हम्म। like health benefits, लेकिन थोड़ा सा ना, yeah, it's a fantasy element then, right? But are But you buying the fantasy is the question. I find it a little creepy. It's getting there. ये वहाज ना होता तो I would never watch it. If it wasn't वहाज, I would not watch it. और हम्म। सदफ जो है for Maya Ali, I sometimes am like she's not the most emotive person, but she picked the right person for this role. हम्म। She looks so beautiful, and then when they say Sadaf इतनी प्यारी है, and I say, oh, जी, we know. that's so childish ना. इस चीज पे मेरी सुई अटकी हुई है. Or 2 minutes maximum. Mhm. My take on this is that there's good news and there's bad news, like you said. And the good news is that this drama is so beautiful. Up, notwithstanding the weird filter that Hasiba Hassan has used, I'm not a fan of that. Mm, But the good news is there is so much eye candy. Everybody's so beautiful, and they've mm, tried to build this world that KRQ tends to build, where people are beautiful and the gararas are flowing and the saris are billowing, and the mm, girl's hair is flying in the wind, and the man is just like falling flat at her beauty. तो ये जो mm, उस तरह का जो ट्रोप्स होते हैं खलील साहब की कहानी में, टू मेक इट बिलीवेबल, ही इज क्रिएटेड दैट वर्ल्ड हसीब हसन, एंड all the actors are speaking in these kind of the typical Khalil Saab dialogues. So that's the good news, that if you're looking for eye candy, you found it. It's like a yeah. treasure trove of candy, beautiful people everywhere. The bad news is that it's not believable.
and it might And it could have continue been. to, it It could it could have have been been really. if the writer had calmed down. Like, now we're not allowed to say that, are we? Yeah, that's what I'm saying, that I think that Khalil Saab needs to either take a break or Hmm. needs to sit with somebody else to co-write with, Hmm. or let somebody else tinker with his script a little, like a या content comp कॉफी or पी something. ले. कुछ कर लें, कुछ थोड़ा Hmm. बहुत कर लें. I think that Wahaj is too good looking in this show, although I feel like that whole alcoholic thing is again not believable to me, because मैंने कराची में, and Karachi is a very Hmm. progressive city, मैंने तो कहीं नहीं देखा. और मैंने हर तरह के लोग देखे, बट ऐसे नहीं देखा कि वो ड्रंकन, मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रंक लोग नहीं होते, होते हैं. लेकिन ये कि वो, और फिर वो पूरा चीज बहुत क्रीपी थी, ऐसे ही होती हैं लड़कियां, इनको देख के बंदा, वो अब्बा Okay, जी जो. I have lived in the West, so I हाँ. have seen it. Right, ओके. the students' union. I with the, like, you're sitting there, and then there's a bar on the other side, right? हम्म. And I have seen behaviors, right? हम्म. And this is the reason I never used to go to parties and things, because I knew and I had seen behaviors, and I हम्म. knew that these people are uncontrollable. And this is हम्म. what's getting me, is how this is. I still remember we were at a business meeting, and the guy with my husband, and the guy kept ordering alcohol. हम्म. It was, and I looked at him, and I think alcohol, some people just, they don't become aggressive, they हम्म. become cute. He इट्स was there with the guy. अनइनहिबिटेड He होते हैं was, ना, yeah. इनहिबिशन लो हो जाती है ना जो अंदर. आपकी real nature है ना, he started making more and more jokes, and he was actually hilarious, and his wife हम्म. was like, what can I do with him? हम्म. So I have seen it, and I will say that Bilal Abdullah, actually, he did the right, the way he's falling and the way he's doing things, right? I'll No, give no, no, Wahab but that's point. not what I'm saying. I'm sure like Vahaj is doing a fab Oh, job okay. with whatever he got. Yeah. And what I'm saying is it's not the norm. Like, yeah, you're rich and rich और wonderful और वो सारा कुछ होने के बाद आप ऐसे बैठ के पी नहीं रहे होते randomly during the day, and I don't know. Yeah, Anyway, maybe there's he more is trauma. emotionally damaged, I think. Yeah, I just don't buy it. I think that Khalil Saab needs to like take a break, basically. I And think that. I found it excessively creepy that he's appointing Sadaf in Hmm. his company. That is, a sensible Also, tariqa. explain to me, why are Yeah. these rich, crazy, powerful men going nuts Hmm. over this शादी? प्यारी, अच्छी प्यारी लड़की है, ये कोई नहीं कह रहा कि She's not प्यारी. Sadi, बहुत खूबसूरत है बहुत वो, खूब, और चले पढ़ी मान ले, लिखी बहुत खूबसूरत, है. पढ़ी लिखी है और अच्छी लड़की है और सादा सी Then I प्यारी. like that. अच्छा. Yes. Okay, I don't buy it. I'm I just, do. I'm not convinced. But I think that overall it's मजा आ रहा है, फिर भी it's one of those shows that you can watch मजे से. तो if you're looking for that question to be answered, कि क्या हम ये देखना शुरू करें, तो करें, because अच्छा है, मजा आ रहा है, it's kind of अच्छा टाइम पास है. वो But आइकॉनिक नहीं है, it's not, लेकिन टाइम पास अच्छा it's है. not, it's not rational. A lot It's of the not stuff rational is at all, rational. at और all. लेकिन लोग जो है ना मुझे डांटे पड़ हैं, well, it's a fantasy, and it's a fantasy. If you can accept that, blah 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 blah, but I'm going, look, you have to make it credible. का लफ्ज सुना है? Hmm. Credible. I don't know उर्दू में क्या उसका, what would be the word in Urdu? In English, Credible. credible means, yeah, it's possible. हाँ, Hmm. हो सकता मुमकिन है, है, मुमकिन right? है. मुमकिन है, right? Hmm. Whereas I'm seeing a lot of things in this drama, Hmm. then they stretch that fantasy thing. Hmm. Credible hona chahiye, and it seems sometimes, and particularly appointing his daughter sight unseen, right? Hmm. It's kind of creepy. And if they are that conservative, and I don't know, मुझे Hmm. कुछ ना, there's something, नहीं, you know, मैं it's बता रही not हूँ, कोई है झोल working. और कहानी, वो उन्होंने एक बनाने की कोशिश की है, वही देवदासी टाइप की चीज, बट आई जस्ट नॉट देवदास, या बट दिस ड्रंक मैन फॉलोइंग इन लव विद दिस वेरी Hmm. इमोशनली डैमेज्ड एंड See, काइंड ऑफ. I don't find drunk men romantic. I find them disgusting, right? So maybe that's it. Yeah, and also I think that the way that he'll finally marry her is like with some cajoling and coaxing, and then finally she'll realize, oh no, he's not a bad man. No, bro, we ain't doing that anymore in 2024. Girls, don't teach girls to do Hmm. that. So that's, I think it may be very regressive at the end of it. But again, I don't want to make that judgment. Let's wait and watch. So
long session this week, guys. Matlab, this was our take. I mean, Sadaf, do you want to add anything else? Because I think that we've No, I'm covered good. pretty much. We had a long session. I think, I was worried that we weren't going to discuss Kabhi Main Kabhi Tum in detail because Huh. it deserved that. Jaffa and Yeah, Kabhi Main Kabhi Tum, yeah. we need to take some time out for Dunyapur क्योंकि Hmm. उसमें इतने झोल हैं and it's just one, you know, that script. When we talk about, people were telling me of Riten Shah is really wonderful. Why are you Hmm. saying these things? Hmm. Well, I'm sorry, he's not in this script. Hmm. No, it has problems. It has very clear problems, and it's running too fast for its own good. That's the problem. That's the big problem. But anyway, we'll Is the definitely. director changing or something? I heard some rumors. Somebody was saying they might change the director, or it is still Sayyid Wajahat. I mean, are you talking about Farar? Farar is No, changed. no, no. The This is Shahid Shafat. This is Dunyapur. Dunyapur is Dunya. Shahid Shafat, na? Okay, okay. Yeah, so I Because don't know the if thing that is, changed. why isn't the director picking up on these jewels, right? You see, I mean, this I is the do blame Bakhtawa directors director, because, so yeah. Yeah, I mean, mm, I don't know. There are a lot of problems with Dunyapur, some things which I think should have been stopped at the script stage, or right. maybe again, it's one of those scripts which are pushed ahead because they are in a certain way. But I don't know. Anyway, it just yeah, we'll definitely discuss that, guys. Let us know if you're watching Dunyapur. Let us know what you guys thought of this week's. I know you guys will tell us, so I don't need to say that. But tell us what you thought of सुन मेरे दिल कभी मैं कभी तुम जफा के ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की है. Sadaf, are there any other closing points that you'd like to add? No, nothing. We love your comments. Keep Hmm. them in. It makes me feel like I'm interacting with other people. Yeah, And अपना opinion और माविश का तो हमने ले लिया. But when you guys comment, I don't know. It really energizes me and it gives me a different perspective. डेफिनेटली डेफिनेटली. और बड़ा Hmm. मजा आता है क्योंकि डिफरेंट Yeah. तरह के लोग, ये भी होता है कि हमारा पूरा कंटेंट देखने, लंबा चौड़ा सेशन होता है हमारा ये Hmm. आपके साथ. तो ये भी बड़ा मजा आता है देखने में कि आप लोगों ने पूरा पूरा देखा, एंजॉय किया हमारे साथ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you. Thank you so much for sharing. And once again, round of applause for the directors and the writers who are showing progressive, intelligent stories. And by progressive, we don't mean to say कि आप ये stories दिखाओ ही नहीं, domestic violence दिखाओ ही नहीं, या Hmm. एक मर्द जो परेशान है उसको नहीं दिखाओ, सिर्फ अच्छे हंसते खेलते कूदते पार्क में जंपे मारते हुए मर्द दिखाओ. दिखाओ, मर्दों के भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाओ, औरतों के भी दिखाओ, लेकिन रिस्पॉन्सिबली दिखाओ. सो दैट्स आवर थैंक यू फॉर द राइटर्स हु आर मैनेजिंग टू डू दैट. अपना बहुत ख्याल रखिएगा सदफ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और गाइज, आप लोग भी डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्यून इन टू सदफ्स ट्विटर एंड यूट्यूब, सॉरी, एंड स्पेसेस जो वो करती हैं अपने उसके ऊपर, और उनके रिव्यूज भी फॉलो करें डॉन के ऊपर. थैंक यू सौरभ, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. गाइस, टेक केयर Thank ऑफ you, योरसेल्फ. Mavish. थैंक यू.